सुरेश, तिदोंग वैली के उस ट्रिप के बारे में बताओ और उससे पहले के 2 ट्रिप्स के बारे में बताओ। तुमने वो जो काम किया था वो किसी भी जियोलॉजिस्ट का, तुम्हारा और यूके बस्सी का जो काम था वो पहला काम था उस एरिया का। उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करो वो एक्साइटमेंट्स, वो पल उस वक्त के। इस वक्त मैं सुरेश के साथ हूँ, सुरेश के घर यहाँ गुड़गांव में। मैंने आज जाना है बॉस्टन और सौभाग्यवश छाया ज़रा कैमरे की तरफ देख के मुस्कुराओ ना। हमारी दोनों की छोटी बहन छाया आज सुरेश के पास यहाँ घर पे है, तो हमने कहा इस वीडियो में छाया को साथ बिठा के हम ये बातें भूविज्ञान की साझी करते हैं। आई एम श्योर छाया को ये बातें सुन के और वो समझ के बहुत मज़ा आएगा। एक बहुत जिसको बोलते हैं गुमान होगा उसको कि मेरा भाई जो देखने में तो बड़ा साधारण सा लड़का लगता था, वो इतना बड़ा काम किया था एक ज़माने में। इसका संदर्भ कॉन्टेक्स्ट ये बना क्योंकि डॉक्टर बीपी सिंह अभी तिदोंग वैली में ट्रिप करके आए और वो शायद तुम लोगों के बाद में पहला ट्रिप है किसी का, और वो जान पे खेल के वहाँ पे काम करके आए और उन्होंने कहा कि वो यूके बस्सी और सुरेश चोपड़ा बहुत ही गजब के जियोलॉजिस्ट रहे होंगे जो ऐसे एरिया में जाके 3 महीने काम किए और इतना इम्पॉर्टेंट काम किए जो उस मेमोयर में छपा। वहाँ पे आप लोगों का जो मैप है वो छपा है, वो भार्गव साहब और बस्सी के नाम से है, बट फॉर श्योर सुरेश चोपड़ा का जो जॉइंट वो फील्ड वर्क था वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। तो लेट्स हियर फ्रॉम सुरेश द स्टोरी ऑफ दैट किन्नौर फील्ड वर्क। Suresh. We were actually the first geologists to do the mapping in the Tidong Valley. कैमरे में देखो। But before going to Tidong Valley, मुस्कुरा के जियोलॉजी की कहानी सुनाओ। We did the mapping in the adjoining Baspa Valley, Upper Baspa Valley. 2 expeditions in the Baspa Valley, and then the third expedition in the Tidong Valley, adjoining Tidong Valley. Third one was your toughest. Yes, the third one was the toughest. Where this place is? Abhi adjoining Baspa Valley में चितकुल used to be the last village. It is still the last village. I'm glad Chaya is being the moderator for a layman so that दुनिया जाने कि क्या है किन्नौर। लोगों ने सुना नहीं है। नहीं सुना नहीं था। अब तो बहुत लोग टूरिस्ट राइट के आज भी बहुत से लोग अमंग जियोलॉजिस्ट नहीं जानते कि वो कितना दुर्लभ एरिया है और क्यों इतना एक्साइटिंग है, और उस वक्त तुम लोगों का वहाँ पे जाना कितनी बड़ी एक वेंचर थी और कितना बड़ा वो एक अचीवमेंट था। और अगर कहीं पे कोई मिस एडवेंचर भी हुआ, हमें वो पूरी कहानी सुननी है वो तुम्हारे उन ट्रिप्स की। बताओ। नहीं, बास्पा वैली में तो सेकंड एक्सपीडिशन में हम अपनी लेडी वाइफ्स को भी साथ ले गए थे। हाँ, वो भी बताना और कैमरे की तरफ झाँको। हमें ज़्यादा कैमरा फेस करने की आदत नहीं है। सुरेश को कैमरा फेस करने की आदत नहीं, पर हीरो आदमी है कि अभी भी। कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? नहीं, हीरो तो नहीं है। अरे सुनो तो उम्र कितनी हो गई? नाउ आई एम 73 प्लस। तो 73 का कहाँ लग रहा है सुरेश? अभी भी 53 का लग रहा है। तो अभी हम जो बात हो रही है वो ऑलमोस्ट 42-43 इयर्स बैक की हो रही है। क्या उम्र थी तुम्हारी जब वो एक्सपीडिशन? मैं आई वाज लेस देन 30 दैट टाइम। या तकरीबन इसी उम्र में हम लोगों ने वो फील्ड वर्क किए थे। उसी वक्त में एक्सपीडिशन बेसिस पे हिमाचल प्रदेश की इंटीरियर जो है वो मैपिंग एक्सपीडिशन होती थी वहाँ पे, बिकॉज द मैपिंग वाज टू बी डन ऑन एक्सपीडिशन बेसिस, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, जैसे प्लेन एरिया में होती है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में होती थी। दोज वर अनएक्सप्लोर्ड एरियाज प्रीवियसली। इधर आ जाओ, तुम उसमें से कट हो रही हमारे। तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है बिकॉज तुम 2 जियोलॉजिस्टों की बहन। चितकुल वैली में तो हम लास्ट विलेज तक, इवन बास्पा ग्लेशियर, वी कवर्ड पार्ट ऑफ द बास्पा ग्लेशियर. Baspa glacier is still one of the longest glaciers in the Himalayas,
and that was the first time we had actually seen snow or actually traveled on the snow and trekked on the snow. और जब हम वो वाली How deep you expedition, went to the glacier? we went almost about 13-14 kilometers into the glacier. You camped on the glacier? Yes. And उस वक्त हिम्मत थी, यंग थे, तो अभी भी जितनी प्रिकॉशन लेके जाते थे आवाज में तो दम है। उतनी प्रिकॉशन लिया। बल्कि जब वो वाला कैंप हम क्लोज करके रिट्रीट कर रहे थे, वापस आ रहे थे, शायद 1 सितंबर की बात है, तो अचानक स्नोफॉल हो गया रात में और तंबू सारे दब गए। जैसे ही सुबह उठे तो चारों तरफ स्नो का नज़ारा देखते ही हम बड़े खुश हुए। थोड़ा सारा इधर उधर देखते रहे, अपने लड़कों को और लेबरर्स को और कुक को बोला कि चलो भाई थोड़ा तंबू वंबू ठीक करो। लेकिन वो उसको तो हमारे पास स्नो गॉगल्स तो थी, लेकिन हमें एक्सपीडिशन के दौरान उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उस दिन क्या हुआ, सुबह ही 2-1 घंटे, बिकॉज इट वाज ब्राइट सनशाइन, तो पूरा स्नो जो है वो वाइट, वो सन जो है वो रिफ्लेक्शन से आपकी आंखों में जाता है। एज ए रिज़ल्ट वी गॉट स्नो ब्लाइंड एक्चुअली दैट डे। और हमें स्नो ब्लाइंडनेस के आंखें बंद होती हैं, पानी आता है, देखने में मुश्किल होती है, कहीं भी चलने में मुश्किल होती है। तो देन वी रियलाइज कि ओह, हमें तो स्नो गॉगल्स पहननी चाहिए थी। होल डे वी वर स्नो ब्लाइंड एंड एक्चुअली इन आवर हार्ट ऑफ हार्ट्स एटलीस्ट आई वाज थिंकिंग कि अभी तो काम हो गया, अभी तो ये हम ब्लाइंड हो गए। बट इट इज़ एक्चुअली ए टेम्परेरी इलनेस। तो उस दिन हमारी सारे लोगों ने, बाकियों ने मदद की, लोकल्स को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा कुक भी थोड़ा ठीक रहा, उसको थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो उसने हमें खाना वाना खिलाया, सब कुछ किया, लेकिन हम सारा दिन आंखें मलते रहे, रात को भी आंखें मलते रहे। सुबह थोड़ा हमें होश आई तो वी वर इन अ बेटर सिचुएशन। देन ऑफ कोर्स वी स्टार्टेड यूजिंग स्नो गॉगल्स। तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा स्नो ब्लाइंडनेस का। ये तुम्हारा सेकंड फील्ड वर्क? यस, सेकंड। ज़्यादा फोकस आज हमारा तिदोंग पे रहे, और वो तिदोंग वाला जो ट्रिप था, हाँ, कितना लंबा था? क्योंकि वो ये जो बास्पा वैली है ये पूरा कवर कर दिया था हमने मैपिंग से। उसके बाद फिर बारी आई नेक्स्ट एक्सपीडिशन में टिडोंग वैली की, जिसको हिमाचल प्रदेश किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको नेसंग वैली भी बोला जाता है। वहाँ पे एक विलेज है नेसंग करके, वहाँ की वाइन बड़ी फेमस है, नेसंग ब्रांडी जो अंगूरों से बनती है। वहाँ अंगूर तो होता नहीं? हाँ, नहीं, अंगूर होता है थोड़ा है। हाँ, तिदोंग में अंगूर होता है? थोड़ा होता है, हाँ, बिकॉज लोअर आल्टीट्यूड्स में तो एप्पल और अंगूर की थोड़ी खेती होती है, तो उसको अंगूर ही बोलते हैं। अच्छा, कितनी उस देर का था वो एक्सपीडिशन तिदोंग वाला? हाँ, वो एक्सपीडिशन भी, ऑल एक्सपीडिशन यूज्ड टू बी रफली 3 months फॉर 90 days, जो वर्किंग सीजन होता है, जून, जुलाई और अगस्त का। तो अगस्त में एक्चुअली यू हैव टू स्टार्ट फाइंडिंग अप एंड कमिंग डाउन, यू नो, There is a chance of your getting caught. Yes. Tidong Valley actually was real. तिदोंग में वर्किंग सीजन कुछ लिमिटेड था और दूसरे एरिया से थोड़ा लिमिटेड। ये more or less same. You could walk across म्यूज जाते थे? Yes, पिगी बैक? नहीं, म्यूज जाते थे। तो म्यूल ट्रैक था, इवन खिमोकल ला तक भी म्यूल ट्रैक था। और तुम लोग किस टाइप के उसमें टेरेन में हैं? It was absolute high altitude and snow tents, 2-man tents जो होते हैं वो लेके जाते थे। You carry on with the story में जरा दरवाजा बंद कर दो। हाँ, तो जब खिमोकल ला का हमने जब जिस दिन ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, तो वी वर एक्चुअली so much surprised and exhausted, and there were fossils strewn all around, you know, on the top. सारे एमोनॉइड्स ऐसे पड़े हुए थे, and we were really in a mood of discovery, you know, that yes, we have discovered something which is right actually on the Tibetan border.
पूरा Paleozoic sequence था उस section में? Triassic Khimokul था. Yes, Triassic was on the Khimokul. So you covered Mesozoic as well as Paleozoic Yes, both? yes. बल्कि वहाँ पे तो हम ये नहीं सोच पा रहे थे कि कौन सा फॉसिल उठाएं, कौन सा ना उठाएं, कौन सा लेके जाएं, कौन सा नहीं लेके जाएं, बिकॉज देयर इज़ ए लिमिट टू व्हाट यू कैन कैरी with your laborers and with yourself on your in your backpack. तुम लोगों का एंट्री पॉइंट मोरंग था तिदोंग वैली का? नहीं, वो आगे से नेक्स्ट नेसंग विलेज आता है. नेसंग. मोरंग इज द एंट्री पॉइंट टू द तिदोंग वैली. नो दिस किन्नौर बास्पा वैली. हाँ, मैं जब भी मोरंग जाता हूँ मुझे हमेशा याद आता है कि ये मोरंग इज द टाउन ऑन द साइड ऑफ द the river bank of the Satluj river, the great river which flows through that. There is a small sort of a fortification there, old fortification. किस टाइप के तंबू में तुम लोग वहाँ रहते थे? एल्पाइन में कि this was all alpine tent. There was no big space to put a big tent. No, सिर्फ एक किचन का टेंट, वेस्ट टेंट टाइप का एक होता था, वो लगाते थे. बाकी तो अल्पाइन टेंट में, छोटे अल्पाइन टेंट में. क्योंकि हम लोग तो बड़े मेस टेंट में स्पीति वैली में रह पाते थे. नहीं, उसमें So were there wide valleys or narrow valleys? No, they were very narrow valleys. Mostly it was narrow, finding a space. All the cliff section? Were the cliff sections? No, sometimes on the river bank we have to camp, near the water source only, where you can get some water. Because otherwise what fetching BP water. Singh told me that water was a big problem. Yes, it it was is. a life and death issue. Yes. And some people died because they did not get water to drink. Yeah. उसके बारे में कुछ आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया? नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं किया, because you always have water. We used to carry water bottles. You were better planned. Yes, better planned, and we knew as geologists, you have to carry things with you. There is no scope for, because there is no habitation, in those areas. Only some treks go, actually even the ITBP or the paramilitary forces, they were not supposed to go near the border, They used to camp, many kilometers. You were at the border. Did you? We were right at the Indo-Tibetan border. Did you step a few? Yes, we did. meters Yes, into the yes. Tibet? As a memory, we stepped inside the Tibetan territory. How deep you stepped in? No, not much. Not much. We did cross, because the borderline most of the time it passes through the center of the peaks. There is no defined border as such. Yeah. It's a sort of a border map marked on the map. So it must have been a great feeling for two geologists to cross into Tibet and look at the rocks in the Tibet. Yeah, now, look beyond. Can we come back to that expedition the year before, when you were with your families and you were carrying your son? You can see Johnny Sankalp Chopra, Suresh's son, who was, how much old he was? He was just 2.5. He was 2.5, and Bassi's daughter, Mani? No, she wasn't there. Bassi was just newly married. Okay. He was on a honeymoon expedition. Okay. And Suresh and Jyoti, they had a two-year-old son with them. And Suresh... And I had to carry my son on my back. You carried him piggyback also? Yes, because he would not go to any labor. थोड़ी देर के लिए जाता था, फिर रोना शुरू कर देता था, फिर मुझे ही उसको लेके जाना पड़ता था. So my youngest child, actually he is my only child. So as a child, as a kid, small kid, he had time to see the glaciers, the snow, the rivers, and riding on my back during almost the full expedition. That was the time when our kids had a chance to peep into high altitudes. My daughter Shalu also had a chance to go twice to Lahore Spiti, and Johnny was slightly elder to her, and Johnny too had that chance, and we had gone with Dr. K.C. Prasher. None of us had a PhD then. I was a simple geologist, and he was also an ordinary geologist, and he had his two sons, Piku and Dabu. Now Dabu has met Shalu in Boston, so Shalu is friends with Dabu's family. I don't even know full name of Dabu. So Suresh, tell us more about those trips where you were carrying Johnny Sankalp Chopra piggyback, and
how was that walk? That was an awful, such a difficult trek. Even During camp shift, these you are had to. these are memories which are unforgettable. And during that time, my wife was perhaps the first lady from the plains. We camped at the outskirts of Chitkul village in that. Now Baspa look into Valley. the camera. You're not a you are slightly camera shy. He's looking out into the Gurgaon. Look into the camera and tell about your trip with Jyoti and Johnny. Yeah. How was that? Those 3 months where Those 3 months were you're traveling. Tough for you. yes, very Tough for you. very tough and But difficult a trekking. great nostalgia for those memories. Yeah, How I do wrote some articles also. After coming back You in wrote the articles? in the Himalayan Journal, Ah. and a journal published from the Mountaineering Institute in Darjeeling. You So described the three, four, experience yeah, of yes. going with Johnny piggyback. Yeah, I have described that. Roughly how many days you carried him on your back? Almost for 2.5 months. No, Almost. daily there was a Yes, camp shift? not daily. Camp shift will happen. So you after, were carrying him only during camp yeah, shift? during camp shift. Of course, because you would not take him during this Yeah, period. no, not So during how this. many camp shifts happened during that? Well, when you, it's difficult to remember right now offhand. around 20? Yeah, there must be, because Or you have to. Around 30. Around 30. Well, less than 30 perhaps. So 20 से 25 दिनों जब कैंप शिफ्ट होता क्योंकि है आप हाई एल्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रेवल तो जियोलॉजिस्ट को हमेशा कैंप शिफ्ट करना पड़ता है। कैंप शिफ्ट करना पड़ता है। वो नॉर्मल फील्ड वर्क की तरह फील्ड वर्क करके अपने कैंप में नहीं आ सकता। वो एक कैंप से दूसरे कैंप में जाता है और रास्ते में फील्ड वर्क करते जाता है। तो उन कैंप शिफ्ट के 20-25 दिनों में उस हाई एल्टीट्यूड में जो वो हाई एल्टीट्यूड तिदोंग से लो रहा होगा बास्पा वैली का I think we covered the highest point 17,000 something. Yeah. So उन दिनों Suresh became extra tough and the tenacity, the mental tenacity and physical tenacity of a geologist to carry a young lad. Because there is no other option. No option because he would not go to any porter. Yes. And that was the time when we remember Suresh was always smart like this, thin and lean. We said Suresh पहले जितना पतला था हमें ये मालूम नहीं था कि इससे भी ज़्यादा दुबला हो सकता है. And he had come back. No, in fact, when Dr. Aluwali is telling me that somebody has Dr. Veer Pratap Singh, as you were telling me, Virendra Pratap Singh, that he went to Khimokul after us, What message you have for Yes, Virendra no, Pratap Singh? He has a salute for you. I have a salute, I have great appreciation because at that time we thought, at least I in my mind was sure that at least for the next 50 years कोई नहीं जाएगा. there cannot be anybody visiting. This is great. It will be an impossible thing. This is great. Because even What we up? could What up? only make it once. If somebody would tell me to make another expedition to You would not Khimokul, we were not in a position So to do it. this is great union of This is a great news for me. that fortitude and toughness, the Yes. mental toughness and the physical toughness of geologists. In the geological scientific forum, many people know Chopra and Bassi from the name Khimokul is associated with They are it. famous for that. So even now, 2 days back when I talked to Dr. Virendra Pratap Singh, he said those are great people. Nobody can go there. Yes, we And, thought nobody, because so- no road will be built there. There is no habitation. There is no After the geologists Suresh vegetation. Chopra and Udai Bassi, Dr. Virendra Pratap Singh and Ranveer Negi from Birbal Sahni Institute of Paleobotany, Lucknow, and Virendra Pratap Singh from Chandigarh. That's a great achievement. Yeah, these 4 geologists would Just be getting remembered. there, getting at that place is such a unforgettable thing. So- because it's not possible for ordinary geologists from any university or survey to go there often everywhere. Even yearly organizing an expedition, it's very, very tremendously difficult. So it's a great opportunity today to have this chat about Khimokul and Kinnaur with Suresh Chopra in the company of his my sister too, Chaya, and in the background of that
boy Johnny, who at the age of 2 was piggyback, was on these shoulders. Now I'll see if I can 42 years back. find out some references about my few articles which We I would wrote love to have that. on the expedition. And it's And then maybe hear from Dr. Ahluwalia more about Virendra Pratap Singh's. we will put you in touch. Yes. We'll have a video chat with him one day on our Google Meet. So great. he has to say It's a about great that. afternoon with the lunch prepared at Suresh Place in Gurgaon. Yes, And meeting Chaya after so many years and talking to Suresh about this trip which he did 42 years back. Yes. And how old is Johnny now? 44? He is now on. He's getting 45. He'll be 45. Yes, around 40. When 44. when he'll be 44. 45? We share the same birthday, my son and me, 27th February. 27th February. So next, he was 44 this 27th February. Yes. So he'll be 45 next February. Yeah, I think. So Suresh, great and wish you long life. And So nice talking to you. same for Dr. Johnny. Ahluwalia. Say our hello to Johnny. And hearing about this great news, which I never expected. But it has happened, somebody has made it. It's really so inspiring. Thank you. Thanks a lot. All the best to Dr. Virendra Pratap.